Hello and welcome everyone to a new episode of Crick Sunday with me, Suramya Kaushik. What a roller coaster week this was. Quite literally, we saw the highest total to the lowest total of this season. And along with that, some terrific performances from Sunil Narayan, Jos Buttler, Travis Head, Ashutosh Sharma, and guess who? Mahendra Singh Dhoni. We saw great performances from all these players, but what all happened in this week? Let's have a quick look in this episode. So let's not do any delay and go to our week's recap. सबसे पहले चलते हैं दिल्ली में. माना वहां है सरकार की चर्चा, लेकिन कैपिटल्स ने कहा रोर मचा. दिल्ली में IPL मैचेस आ गए हैं and just have a look at how fans enjoyed the match in Delhi, which was between Delhi Capitals and Sunrisers Hyderabad. Apart from the match, also have a look at who they think will win this season. किसको देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो और IPL दिल्ली फाइनली आ गया है तो उसके लिए कितना एक्साइटेड हो? देखिए हम लोग तो सबसे पहले मैं तो ऋषभ पंत का बहुत बड़ा फैन हूँ और जिस तरह उन्होंने बैकअप किया है मतलब मुझे बहुत खुशी हुआ कि उन्होंने फिर से मैदान पर लौट गए और आज तो बस ऋषभ के छक्के देखने के लिए आए हैं हम यहाँ पे. हाय, मैं आई हूँ ऋषभ पंत के लिए. ऋषभ पंत. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ ऋषभ पंत. आपने जर्सी नहीं पहने हुए, यू आर वन ऑफ दोज रेयर फैंस, तो आप किसको सपोर्ट करने आए हो? DC. ऋषभ पंत. SRH. कितना स्कोर करेगा ऋषभ अगर पहली बैटिंग आई तो? देखिए मैं तो चाह रहा हूँ 100 मारे वो, क्योंकि जिस फॉर्म में वो खेल रहे हैं, जिस तरह से उनके बल्ले पर गेंद आ रही है, तो आज पूरा उम्मीद है कि आज 100 मारेंगे ही मारेंगे वो. और दिल्ली कितने मार्जिन से जीत सकती है अगर पहले बैटिंग करेगी? देखिए अगर दिल्ली ने अगर पहले बैटिंग किया तो आज तो 200 प्लस पक्का है. आई एम एक्सपेक्टिंग ऋषभ पंत सेंचुरी मारे. सब कुछ होगी एक्सपेक्टेशन. या एग्जैक्टली. क्या एक्सपेक्टेशन है ऋषभ पंत से? आज क्या करने वाला है? आज तो यार धूम मचानी पड़ेगी ऋषभ पंत को एंड आई गेस काफी अच्छा खेलेंगे, बोथ बाय विकेट कीपिंग एंड बैटिंग. सनराइजर्स को सपोर्ट कर रहे हो? सनराइजर्स में किसको सपोर्ट कर रहे हो? क्लासन को. क्लासन स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत मार रहे हैं. आज वो आतंकवाद है वो. और उधर कुलदीप है और अक्षर है. कोई बात नहीं, क्लासन बहुत धुआं छोड़ा देगा सबका. हैदराबाद जब तक 250 नहीं मारेगा वो नहीं जीतेगा, क्योंकि इसके पास बॉलर नहीं है. बॉलर नहीं है उसके पास और नहीं तो फिर जीतेगा भी नहीं. 250 नहीं लगने वाले जो आप बोल रहे हो. फिर पृथ्वी शामी मारेगा 150 रन के लिए. सामने वाले को कितने में निपटाएगी? भी उनकी बैटिंग बहुत बढ़िया है. देखिए बैटिंग बढ़िया है, वो लोग भी अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारी दिल्ली जीतेगी. DC जीतेगी, डोंट वरी. DC is gonna win for sure. हैदराबाद ही जीतेगी. SRH will win easily. दिल्ली वालों को सुनकर तो काफी मजा आ गया, लेकिन अभी तो शुरुआत है दिल्ली में मैचेस की. अभी तो और मैचेस आने बाकी हैं और जैसे हम आधे स्टेज पर पहुंच चुके हैं IPL के, आने वाले दिनों में और मजा आएगा क्योंकि वहां होगी रेस टॉप 4 की. Do you remember what happened on 19th April 2008? नहीं. Well, that was the first time when MS Dhoni played in IPL. And it was again on 19th April 2024 when we saw Dhoni playing against Lucknow Super Giants and he batted with a strike rate of more than 300, scoring 28 of 9. मजा आया. But what made the headlines this week was his exceptional batting against Mumbai Indians, where he smashed those 3 big sixes to Hardik Pandya in the first 3 balls. And at the end, the difference between the two teams as Chennai Super Kings won the match was of just 20 runs. Exact 20 runs that MS Dhoni had made at the end in the last over. Which means Dhoni was the pure difference between the two teams. Well, it'll be quite fair enough to say that Thala for a reason. Well, let's have a quick look at how fans reacted to Dhoni's knock, because they think that Dhoni is still the best finisher in the world till date. What's your thought? Do let us know in the comment section as we have a quick look at all the memes and posts on social media.
This is a season of record-breaking totals, and the architect behind it? Sunrisers Hyderabad. Well, Travis Head made a fury 100 against RCB, but SRH are some other breed. After Head's 102 of 41, Klassen and Abdul Samad made mockery of RCB bowlers and took SRH to the highest ever total of 287 in the IPL history. It was mind-blowing, but not to forget that entertaining knock from DK that kept RCB in the match till some time. But as I really can't breathe at this time, having seen what Travis Head and others did, so we'll take that time to watch how fans reacted to this innings. एक तरफ रनों की बारिश थी तो दूसरी तरफ रनों का बिल्कुल सूखा पड़ा था. Yes, I'm talking about what happened the day after SRH's highest ever total in IPL history. That day it was GT versus DC. Now Gujarat Titans also made a record, but they made a record of the lowest IPL total in this season. They managed just 89 runs against Delhi Capitals and brought an upset to the fans. And let's have a look what fans are saying, because in the last 2 seasons of Gujarat Titans, they were performing really well. Now fans are wondering what's wrong with their favorite Gujarat team, and let's have a look. This IPL is just mind-blowing. On one side, we are getting to see some great matches, edge of the seat thrillers. But on the other side, we are seeing how 200 plus scores are just a usual game day in IPL. And the teams are reaching the 300 mark. It's getting bigger and better every day. But to talk about IPL, we have forgotten one thing: individual performances. This week we saw some great performances. एक तो सुनील नारायण का 100 हमने देखा, Travis Head का 100, but my personal favorite was Jos Buttler's unbeaten 107 against Kolkata Knight Riders. He showed why he's called Jos the Boss. Well, that was my personal favorite. What do you think? Which knock was your favorite? Do let us know in the comment section down below. And I know that you are reaching in huge numbers to the stadiums, but also reach in huge numbers to the election booths, because your right is to cast a vote. So don't forget that, and along with that, don't forget to watch Cricket Sunday with me every Sunday only on Cricket Next.